हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इग्नो सेंटर पर। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि जो आपका इग्नो असाइनमेंट है 2020-21 में जिसका एडमिशन हुआ था, उन सब का आ चुका है। और आपको बस असाइनमेंट सर्च करने के लिए गूगल पर लिख देना होगा इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर 2020-21 बोलकर। उसके बाद में आपको जैसे ही फर्स्ट स्क्रॉल करेंगे, आपको असाइनमेंट का टॉपिक देखने को मिल जाएगा। और आप सभी को मालूम है, जैसे हम एमईजी टॉपिक पर डील कर रहे हैं, तो आप पहले जाकर एमईजी टॉपिक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा असाइनमेंट का, वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने एमईजी 02 और 03 हमारे चैनल के यूट्यूब वीडियो पर पूरा सॉल्व असाइनमेंट हमने प्रोवाइड करा दिया है। और अब जो हम प्रोवाइड कराएंगे वो एमईजी 04 का होगा। तो दोस्तों, आपको एमईजी 04 पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डाउनलोड होना का ऑप्शन दिखाएगा, और उसके बाद में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर खुलकर रेडी हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश एमएजी 04 का क्वेश्चंस आ चुका है हमारे सामने। असाइनमेंट फॉर जुलाई 2021 एंड जनवरी 2022 सेशन। और ये जो आपका टॉपिक रहेगा वो एक्सपेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, जो कि आपका एमएजी 04 का टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, आप इस पर देख सकते हैं कि आपको जो कोर्स कोड, प्रोग्राम नेम और ये सब किस प्रकार से देना है और आपको किस प्रकार से सबमिट करना है, उस सब का गाइडलाइंस है। इस पर आप पहले गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा असाइनमेंट करने से पहले। और दोस्तों, आपका जो क्वेश्चंस पेपर है, वो क्वेश्चंस हम अब पढ़कर उसका जो सॉल्व असाइनमेंट है वो इस वीडियो पर क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद में आपका ये वीडियो जो होगा वो पार्ट 3 में डिवाइड होगा, और ये आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो दोस्तों, आपका नंबर 4 पॉइंट में देख सकते हैं, जैसे यूज ओनली फुल स्केप साइज पेपर फॉर योर रिस्पॉन्स एंड टैग ऑल द पेज केयरफुली। उसके बाद में जो नंबर 5 पे है, राइट द रिलेवेंट क्वेश्चन नंबर विथ ईच आंसर। आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छे से नंबर लगा के देना है। उसके बाद में नंबर 6 पर जो पॉइंट है वो देख सकते हैं, यू शुड राइट इन योर ओन हैंड राइटिंग। आपको अपनी राइटिंग पर लिखना है। और आपका जो सबमिशन डेट रहेगा दोस्तों, ये 31 मार्च 2022 रहेगा। जिन्होंने जुलाई 2021 में एग्ज़ाम किया है, सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है, और जिन्होंने 30 सितंबर 2022 रहेगा जिन्होंने जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लिया है। तो दोस्तों, आपके पास बहुत टाइम है आपका ये प्रोजेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, जिनका मार्च 2022 31 लास्ट डेट है, वो ज़रूर आपका क्वेश्चंस का जो आंसर है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका जो सबमिशन का नोटिफिकेशन आए उस टाइम आप सबमिट कर दें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ आ चुका है। एमएजी 04 एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज असाइनमेंट 2021-22 बेस्ड ऑन ब्लॉक 1 to 9, कोर्स कोड एमएजी 04/2021-22 and marks score is 100. So friends, here I read all the questions, and after that I provide you the solve assignment answer. So friend, your assignment question number 1 is, write short note on the following. Number 1, langue and parole. Number 2, type of negation and its interaction with scope. Number 3, code mixing versus code switching. Number 4, generative grammar. And number 2 question is, languages enrich and in love though borrowing. Discuss the various borrowing in English language by giving examples. So फ्रेंड, ये आपका नंबर 2 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में नंबर 3 क्वेश्चन जो है, हाउ इज इन्फ्लेक्शनल मोर्फोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम derivational मोर्फोलॉजी, डिस्कस बाय गिविंग एग्जाम्पल। ये आपका नंबर 3 का क्वेश्चन रहेगा। नंबर 4, डिस्कस केस thematic roles and theta theology by citing relevant example। ये आपका नंबर 4 का क्वेश्चन रहेगा। और आपका जो नंबर 5 में है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है।
तो दोस्तों जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसका नंबर 1 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और कॉन्सोनेंट ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ विच द vocal cord vibrate is called dash consonant. Number 2, a consonant during the articulation of which there is no vowelic opening or the oral cavity is closed, then it is called a dash consonant. ये आपका नंबर 2 का फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन अ प्लूसिव एंड एन affricate is that during the articulation of plosive, the release of air is dash, and during the articulation of affricate, the release is dash. ये आपका नंबर 3 का क्वेश्चन रहेगा। नंबर 4, अपोलोफोन्स आर डैश ऑफ द सेम डैश। ये आपका नंबर 4 का क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर 5, vowels are more dash than consonant. There is little or no dash in the productive of the vowel. ये आपका नंबर 5 का क्वेश्चन रहेगा। नंबर 6, dash is a sound which is present in your mother tongue but not in English. Use IPA to indicate the sound. ये आपका नंबर 6 का क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर 7, dash is a voiceless bilabial plosive and dash is a voiced alveolar literal phoneme in English. Use IPA to indicate the phoneme. ये आपका 7 का क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर 8, a speech sound which pattern like a consonant but is phonetically a brief vowel such as W in win is called a dash. ये आपका नंबर 8 का क्वेश्चन रहेगा। नंबर 9, fricative are products by a dash in the vocal tract so as to dash. ये आपका नंबर 9 का क्वेश्चन रहेगा। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सपेक्ट ऑफ द लैंग्वेज MEG 04 का, वो रहेगा द डैश vowels serve as point of reference for identifying real vowel in actual language. ये आपका नंबर 10 का क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे जो है वो हम आपको आंसर का PDF खोलकर दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आए हमारे चैनल के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आंसर PDF की तरफ। हेलो दोस्तों, तो आपका जो MEG 04 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज असाइनमेंट का सॉल्व व्हाट्स आंसर है वो खुलकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं MEG 04 एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज असाइनमेंट 2021-22 कोर्स कोड MEG 04/2021-22 मैक्सिमम मार्क्स 100। तो दोस्तों ये आपको 100 मार्क्स कैरी करने में मदद करेगा और ये जो आपका है वो सॉल्व असाइनमेंट है। तो दोस्तों ये जो वर्ड PDF है वो हम अभी लैंडस्केप व्यू में देख रहे हैं, इसीलिए कुछ सेंटेंस ऊपर नीचे हो रहा है और आंसर आपका पूरा है इस पर। तो दोस्तों हम ये आपको पोर्ट्रेट फॉर्म पर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये जो है वीडियो आपका पोर्ट्रेट फॉर्म पर अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए हम आपको लैंडस्केप व्यू पर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी अपना पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए ताकि आप आपका जो असाइनमेंट है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके लिखने के लिए। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग था, जिस पर आपका 20 मार्क्स कैरी करता है। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था वो था लैंग्यू एंड पारोल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फ्रेंच वर्ड लैंग्यू लैंग्वेज और टंग एंड parole speech enters the vocabulary of theoretical linguistics with
Ferdinand de Saussure course in General Linguistic, which was published posthumously in 1915 after having been collated from student notes. La Langue donates the abstract systematic principle of all language, without which no meaningful awareness parole will be possible. The course manifests a shift from the search for original and ideals, typical of 19th century science, to the establishment of systems, referring to aspect of language examined by Ferdinand de Saussure at the beginning of the 20th century. Langue donates a system of internalized shared rules governing a national language, vocabulary, grammar, and sound system. Parole destinates actual oral and written communication by a member or member of a particular speech community. Saussure understanding of the nature of language and his brief that scholarship should focus on investigating the abstract systematic principle of language, instead of researching etymologies and language philosophy, led to a revolution in the field of linguistics. The discussion concerning langue and parole was first suggested by Ferdinand de Saussure and popularized in his course De Linguistique General course in General Linguistic, a series of Saussure University lectures collected by his students and published posthumously in 1916. Abandoning the mindset, goals, and objectives of historical linguistics, Saussure advocated a synonymic examination of language, not interested in studying a particular language or the linguistic habit of any one member of a given speech community. Saussure sought to examine language in general and to identify the system or rule and convention according to which language function. Saussure's view on language influenced linguistics during the 20th century, and his imprint can be found in theoretical works discussing phonetic, phonology, morphology, syntax, pragmatics, and especially semantic. Indeed, the distinction between langue and parole form an important part of the theological basis of structuralism. Popular lecturer at the University of Geneva, Saussure suggested ideas and concepts that fascinated his students, yet he did not personally write an authoritative guide to his view. Two colleagues of his, Charles Bailey and Herbert Cincinnati, collect and edit students' notes from three occasions during 1906 to 11, when he delivered his lectures, publishing the
assembled remarked under the title course De Linguistique generally in 1916. In the 1990s, newly edited version of student notes based on Saussure lectures along with transition into English appear. At the beginning of 21st century, there is still disagreement about a number of Saussure statements and problems surrounding the fragmented nature of some of the students' notes have not been fully resolved. So friend, till here you have your number one short note, and then we move to number two or second topic, type of negation and its interaction with scope. And the answer is negation is in logic is a one place operator that converts a true proposition into a false one and a false proposition into a true one. In English syntax, any one of the element no, not, ante, never, neither, nor, nowhere, whereas scope is a semantic property specifying the domain of interpretation of an expression such as an adverb or a quantifier often relative to another such expression. Scope is resolved at the level of LF logical form. Negation in English is a fascinating area of study, partly because it plays a central role in affecting both the structure and the total meaning of a sentence. At the time, the term negation is used to cover words such as the utterance no, not, and the contradiction anti. The negative identified pronouns nothing, nobody, the adjective no, as in no one or no money, the adverb nowhere, never, and the conjunction neither nor. So friend, till here your second short answer was also finished, and now we move to the number three topic, which was code mixing versus code switching, and the answer is code switching. Alternating between two or more language or language varieties or dialect in the context of a single conversation using element of more than one language when conversing in a manner that is consonant with the syntax, morphology, and phonology of each language or dialect. Second topic, code mixing. Truth be told, many people use the term code switching and code mixing interchangeably. Some linguistics, however, make a distinction in which code mixing refers to hybridization of two languages. E. H. Parker, which use an English root word and Spanish morphology, and code-switching refer to the movement from one language to another. Many pairs of language have a hybrid name. Some languages hybridized with English include Spanglish
for Spanish, Hindilis for Hindi, and Frenchlis for French. So friend, till here your third short note topic was also finished, and we move to number 4, which is generative grammar. And the answer is, in linguistic, generative grammar is grammar, the set of language rules that indicate the structure and interpretation of sentence that native speaker of a language accept as belonging to their language. The grammar refers to the set of rules that structure a language, including syntax, the arrangement of word to form phrases and sentence, and morphology, the study of words and how they are formed. Generative grammar is a theory of grammar that holds that human language is shaped by a set of basic principles that are part of the human brain and even present in the brains of small children. This universal grammar, accordingly to linguistic like Chomsky, comes from our innate language faculty. Number 1 point, generative grammar is a theory of grammar first developed by Noam Chomsky in the 1950s that is based on the idea that all humans have an innate language capacity. Second point, linguistics who study generative grammars are not interested in prescriptive rules. Rather, they are interested in uncovering the foundational principles that guide all language production. Number 3, generative grammars accept as a basic premise that native speaker of language will find certain sentence grammatical or ungrammatical, and that this judgment gives insight into the rules governing the use of that language. Adopting the term generative from mathematics, linguistic Noam Chomsky introduced the concept of generative grammar in 1950s. This theory is also known as transformational grammar, a term still used today. So friend, till here a number 1 short answer was done, and in the next part we begin with our second question. So hope you all like this video, and please, if you get help from this video, don't forget to subscribe, share and like. Thank you, and if you have any questions, please comment on the below comment section.